बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वेलकम करता हूँ ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेशन है, इसकी असेसमेंट काउंट नहीं होगी, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि जब फर्दर आपको कोई क्विज मिले मॉलम पे या असाइनमेंट मिले तो आपको काम करने में, इसको सॉल्व आउट करने में आसानी रहे और आपके अच्छे ग्रेड्स आए, ताकि आपके ओवरऑल असेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा अच्छे आपके ग्रेड के साथ आप पास आउट हो जाएं। तो आज हम MCQs की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप MCQs क्विज के फॉर्म में कर चुके हैं, तो आज हमें सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है, इसकी कोई असेसमेंट काउंट नहीं होगी, लेकिन आप लोग इसको प्लीज़ केयरफुली इस वीडियो को देखें और MCQs को ओवरव्यू करें, क्योंकि ये बाद में रिपीट होंगे क्विज की फॉर्म में इंशाल्लाह। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, फर्स्ट वन इज द, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वन से। पॉइंटर भी ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से पॉइंट आउट होता रहे। सो फर्स्ट वन इज द, अ गुड हेल्थ ट्रायड डज नॉट इंक्लूड। ट्रायड के बारे में अपने पहले पढ़ा हुआ है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आज दिस वन इज द गुड हेल्थ ट्रायड डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग, मीन्स कि इसमें से कुछ ऑप्शन हैं, जो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे विच आर पार्ट ऑफ द गुड हेल्थ ट्रायड। दे आर फिजिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस एंड मेंटल स्टेटस। आपने हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। तो ये तीनों कंपोनेंट्स फर्स्ट 3 जो हैं इसमें आ जाते हैं। दे आर पार्ट ऑफ गुड हेल्थ ट्रायड। इकोनॉमिक स्टेटस इज ऑब्वियसली नॉट द कंपोनेंट ऑफ गुड हेल्थ ट्रायड, लेकिन इकोनॉमिक्स कैन अफेक्ट द हेल्थ, बट बेसिक जो कंपोनेंट्स है दे आर फिजिकल, सोशल एंड मेंटल। सात ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन आपके सामने। सेकेंड वन, हमने एक टॉपिक पहले पढ़ा था अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ डज नॉट इंक्लूड। अगर आप लोग रिमाइंड करें, अपने रिकॉल करें नॉलेज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का पूरा एक लेक्चर हमने डिस्कस किया था। इसमें ऑप्शन हैं होस्ट, एजेंट, रिस्क फैक्टर एंड एनवायरनमेंट। इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं which are determinant of health, such as host, risk factor and environment. Obviously agent is an independent factor. Next one is the epidemiological triad. ये तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके सामने काफी दफा डिस्कस हो चुका है, आपने ड्रॉ भी किया हुआ है। तो this includes, does not include। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन इसमें से इंक्लूडेड नहीं है। Obviously host, agent एंड फोर्थ वन एनवायरनमेंट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आपने पढ़ा था और उसमें होस्ट होता है, एजेंट एंड एनवायरनमेंट। अगर आपको याद हो तो आपके सामने एक दफा ड्रॉ करने की भी कोशिश करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को। इट्स अ ट्रायंगल और this one is the A is for agent, H is for the host and E is the for environment, A H E. This is the epidemiological triad. ये बहुत दफा रिपीट हुआ है, इसको आपने भूलना नहीं है, इसको याद रखना है। So epidemiological triad does not include risk factor. Then according to Gordon's classification of prevention of disease include all the following except one: primary prevention,
universal prevention, selective prevention, indicated prevention. तो इसमें एक का ऑप्शन इंक्लूडेड नहीं है, which is the first one, primary prevention. Then prevent complications prevention of the complication is included in the which of the following levels of prevention. Level of prevention में बार बार आपके सामने रिपीट हो चुका है टॉपिक, 3-4 मरतबा हमने डिस्कस किया, उसके वीडियोस भी आपके साथ शेयर किए हैं. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन prevention of complication is included in which of the following level है? आपने लेवल्स पढ़े थे, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शियरी. तो कौन से लेवल पे prevention of complication included है? This one is the C option. Secondary prevention में होता है prompt early diagnosis and prompt treatment. Early diagnosis ताकि बीमारी का जल्दी पता चल जाए, और prompt treatment is that after diagnosis, confirming the diagnosis, you promptly treat, rapidly treat the cause ताकि treatment disease जल्दी खत्म हो जाए और उसके complication ना आए. तो it is included in the secondary level of prevention. Next one, epidemiology does not include which study. आपने different types की studies पढ़ी होंगी, research के topic आपने पढ़ा, different types of studies हैं जिसमें different components हैं, frequency, distribution, description and determination. Epidemiology does not include which study? Frequency, distribution, description and determination. So obviously it does not include the description. Epidemiological studies में description नहीं होती, लेकिन उसके frequency, distribution, determination, determinants वगैरह होते हैं, लेकिन उसमें description नहीं होती है such disorder की. New cases in a population during a fixed period of time is determined by, ये भी common terminologies हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. Number of new cases is incidence. Prevalence, already confirmed cases. Then is the attack rate. Then is the disability rate. Attack rate is basically the spread of the disease from already confirmed cases. Disability के number of complications कितने develop हो रही हैं after getting the disease. So new cases is obviously incidence rate. Cross-sectional study is including which of the following type of epidemiological study? क्रॉस सेक्शन, एक आप रावलपिंडी में सैंपलिंग करनी है, तो आप ऐसा सैंपल चाहेंगे जिसमें सारी पॉपुलेशन कवर हो जाए, कोई पॉपुलेशन सेगमेंट मिस ना हो. तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी, एनालिटिकल स्टडीज हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडीज, इकोलॉजिकल स्टडीज. तो करेक्ट ऑप्शन इज एनालिटिकल स्टडी. इनकी डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है, होपफुली आप सबको पता हो कि व्हाट इज मेंट बाय एनालिटिकल स्टडी, व्हाट इज मेंट बाय डिस्क्रिप्टिव स्टडी, रैंडमाइज्ड कंट्रोल क्या होता है, ecological studies. Ecological studies are basically the environmental studies. Randomized controls, they are basically जो आपके क्लास में फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर फार्मेसी हैं, वो ज़्यादा बेहतर इस बारे में जानते हैं कि डिफरेंट मेडिसिन के जो ट्रायल्स होते हैं, तो वो रैंडम ट्रायल्स होते हैं. इनिशियली एनिमल ट्रायल्स होते हैं और उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं. रैंडम स्टडीज हैं, उसमें ये नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन रैंडमली सिलेक्ट करना होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं करना कि अब आपकी क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, तो इस क्लास में से ये नहीं कर सकता कि फर्स्ट 10 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लें या लास्ट 10 सिलेक्ट कर लें. दिस वुड बी अ नॉन सिलेक्टिव, नॉन रैंडम सैंपल. रैंडम सैंपल ये होगा कि एवरी वन इज हैविंग इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. फॉर एग्जांपल सब रैंडमली
सेलेक्ट करें कि एवरी थर्ड वन या एवरी फिफ्थ वन, इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, या सब लोगों का नाम लिख के या रोल नंबर लिख के स्लिप्स में लिखें सब लोगों का नाम, और वो किसी बॉक्स में डाल रहे हो, रैंडमली 5 स्लिप्स उठा लें तो रैंडम सिलेक्शन हो जाएगा कैंडिडेट्स का। Then next one is what are the advantages of cohort study? Cohort study के क्या advantages हैं? Except incidence cannot be calculated, bias minimized, relative risk can be estimated, dose response ratio can be calculated. तो ये बड़ा आसान है, इसमें इंसिडेंस कैलकुलेट हो सकता है। कैन नॉट वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, तो इंसिडेंस कैन बी कैलकुलेटेड। अगर ये इंसिडेंस कैन बी कैलकुलेटेड होता तो ये क्वेश्चन होता है एडवांटेजेस ऑफ कोहॉर्ट स्टडीज आर all of the following. Study which proceed from effect to cause. कौन सी स्टडी effect से cause की तरफ सर्च आउट करते हैं कि either this cause effect, ये जो effect हो रहा है, अगर किसी के सर में कोई रिसर्च कर रहे हैं कि हेडेक की क्या कॉज हो सकती है, फॉर एग्जांपल हेडेक की कॉज लैक ऑफ स्लीप, इसके दरमियान कोरिलेशन डेवलप करना, दिस इज द इफेक्टिव कॉज स्टडी। इसको किस तरह की स्टडी में लेबल करेंगे? कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल, इकोलॉजिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। तो दिस वुड बी ऑब्वियसली a केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पे। सिवेरिटी ऑफ एपिडेमिक डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसी भी एपिडेमिक की जो सिवेरिटी है किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी। सिवेरिटी ऑफ द एपिडेमिक डज नॉट डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक कंडीशन, होस्ट पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिक कंडीशन, सोशो कल्चरल बिहेवियर, किस पे डिपेंड नहीं करेगी सिवेरिटी। अब देख लें आप, कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड कर रही है, जियोग्राफिक कंडीशन पे भी, सोशो कल्चरल पे भी, एक्सेप्ट होस्ट पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट एवरीवन इज अफेक्टेड, कोई भी ह्यूमन इम्यून नहीं है इन्फेक्शन से, एपिडेमिक से। फर्स्ट स्टेप इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एपिडेमिक इज, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, स्टॉप किया था, अजान हो रही थी फिर इससे स्टॉप किया, अभी दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक, कोई भी एपिडेमिक जब हो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा एपिडेमिक इन्वेस्टिगेट करने में? कंफर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, एनालिसिस ऑफ द डेटा and search the cases. The first step would be to confirm the diagnosis, whether this epidemic is because of which disease. जिस disease को blame कर रहे हैं कि it is because of malaria, dengue or corona. So first is confirmation of the diagnosis. Then which steps are not involved in the preparedness of an epidemic. जब आप किसी epidemic के लिए prepare होते हैं के रिस्पॉन्स देने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कौन से स्टेप इसमें इंक्लूडेड नहीं है? मैन पावर ट्रेनिंग ऑब्वियसली इंक्लूडेड, लॉजिस्टिक्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड, रिहेबिलिटेशन तो एंड स्टेप है कि जब डिजीज हो गई उसके बाद कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो गई, देन लास्ट में रिहेबिलिटेशन का एफर्ट होता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑब्वियसली इंक्लूडेड। Which of the following which is not a type of screening? कौन से टाइप जो मैं लिखे लिस्टेड है इनमें से स्क्रीनिंग की टाइप नहीं? मैस स्क्रीनिंग, मल्टीपल स्क्रीनिंग, लो रिस्क स्क्रीनिंग एंड हाई रिस्क स्क्रीनिंग। ये आप अलग से अपने डेफिनेशंस पढ़ें इनके बारे में, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होंगे जब आप रिसर्च थीसिस लिखेंगे
उसमें जब भी किसी जगह पे आप एज अ कंसल्टेंट पब्लिक हेल्थ काम करेंगे तो यू मस्ट नो व्हाट इज मेंट बाय मैस स्क्रीनिंग, मल्टीपल स्क्रीनिंग, लो रिस्क स्क्रीनिंग, हाई रिस्क स्क्रीनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है लो रिस्क स्क्रीनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। देन कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी आपको लाजमी आनी चाहिए। कैपेबिलिटीज टू आइडेंटिफाई हु हैज द डिजीज इज डन बाय मेयरिंग। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, वैलिडिटी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड रिपीटेबिलिटी। ये आप सबको आना चाहिए। वैलिडिटी के क्या मतलब है? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, रिपीटेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज द peculiarity of a hospital as an organization is all except। basically function of hospital पूछे हैं, basic उसका aim पूछे हैं। production can be quantified, dual authority, personnel services, no unity in the line of the command। किसी भी हॉस्पिटल की जनरल सर्विसेज होते हैं, इसमें ऐसे पर्सनलाइज सर्विसेज तो नहीं होते, लेकिन जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस comprises all except productivity power, adaptability to the change, flexibility in the structure and strategy, rigidity in the structure। किसी भी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में सारा कुछ होना चाहिए एक्सेप्ट दिस वन, सी ऑप्शन। फैक्टर which influence core variables are all except motivation obviously influence करेगी, decentralization influence करेगी, autonomy obviously, mobility is the different thing। types of the models effectiveness except types of models of effectiveness are all except। कौन से models ज्यादा effective है? human relation model, rational goal model, closed system model, internal process model। इसमें सारे जो मॉडल्स हैं, ह्यूमन रिलेशन is a better one, rational goal mean कि evidence based model हो, internal process model based effective है, closed system model is not that good। इनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। the types of model of effectiveness, which is the skeleton of organization। organizational function, decentralization and coordination, organizational structure। basically organizational structural के ही components हैं, function, decentralization and coordination। which services are not part of hospital services। इनसे कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं which are not part of the hospital services? essential services mean कि emergency services सबके लिए होंगे, utility services, administrative services, additional services the obviously the wrong option। all except one is the output indicator of a hospital system। कैसे assess करेंगे हॉस्पिटल के फंक्शनिंग को? पेशेंट सेटिस्फेक्शन से assess कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन इससे एक्सेस होगा। इसका ओमिट कर दें, एमसीक्यूज में फिर से मिस्टेक है, इसको ओमिट कर दें। इस एमसीक्यूज को ओमिट कर दिया। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द supportive services of hospital include all except
Pharmacy, obviously essential part. Laboratory services, obviously essential part. Laundry services, very important. Housekeeping is more related to the hotel industries, which is not the basis of classification of hospital. Main जो classification is based upon the specialty, function. इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए, साइज पे डिपेंड करता है, इसको भी ठीक कर लें। हमने पढ़ा है डिफरेंट साइज ऑफ हॉस्पिटल्स, इसको डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। Which of the following function is not a functional division of hospital? इसमें भी डी ऑप्शन ठीक है। तीन तरह के डिवीजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। क्वाटरनरी हॉस्पिटल ऐसे नहीं है, so primary, secondary and tertiary. So यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट है, इसके आप प्रैक्टिस करें और जो टर्म्स मैंने आपको बताए हैं उनको दोबारा से रिवाइज करें, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच जी। यहाँ पे हम अपना एंड करते हैं ये प्रोग्राम। टिल देन बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज।